नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और मेरे साथ आज है एक शख्स who has been dying to preview a Chelsea match and the season has now started. Anant Tyagi, you have got your wish. Absolutely, yeah. Thank you so much, yeah, for having me once again. And really excited about this Premier League season. Although Chelsea ने जिस तरह का transfer market enjoy or not enjoy किया है, should I put it that way? I have my fingers and toes crossed what they can achieve this season. But it's good to get started in this Premier League season with Chelsea, and what a London derby we have on our hands. बिल्कुल अनंत, आई थिंक टॉटनहम हमारा क्लब जिन्होंने अपना बिजनेस कहते हैं ना अर्ली इन द विंडो काफी Yeah. खत्म कर लिया था। दे गॉट इन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, इवन पेरिसिच आए, बिसूमा आए, जेट स्पेंस आए, रिचार्लिसन ऑफ कोर्स आए। चेल्सी में ऑब्वियसली देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु केम इन, लॉट ऑफ प्लेयर्स वेंट आउट, बट अनंत आई सस्पेक्ट कि टुवर्ड्स द लास्ट 15 डेज ऑफ दिस विंडो चेल्सी काफी ट्रांसफर एक्टिविटी कर सकती है अभी और। Yes, that's what I'm hoping for. Yeah, I think there are still some gaps that need to be plugged. So I'm expecting now that the management is more settled and that Thomas Tuchel knows exactly, and he will know more after this London derby in terms of what those areas are. मुझे ऐसा लग रहा है कि with a win under their belt in the first game at Goodison, वो जो hoodoo था वो Goodison Park का वो जो टूट गया है, thankfully, I think they can plan a little better now in the remaining 2 weeks or a fortnight, so that maybe or at least we can challenge City and Liverpool a little more. तो अनंत, सिंस यू आर द चेल्सी एक्सपर्ट, थोड़ी बात करते हैं प्रीवियस मैच की। 1-0 विन पिकअप करी चेल्सी ने। टू बी ऑनेस्ट, इट वाज अ मैच व्हिच वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट थ्रू बिकॉज वो काफी ज्यादा मुझे लगा कि वैसे भी बोरिंग था और टैक्टिकली भी थोड़ा डल था। वी कुड सी कि बोथ टीम्स आर स्ट्रगलिंग, स्पेशली अगर आप बात करें चेल्सी की विद रिस्पेक्ट टू द फ्रंट थ्री जेलिंग, बिकॉज दिख रहा था कि वो पहली बार खेल रहे हैं आपस में। सो आपके क्या टेक अवेज हैं फ्रॉम द फर्स्ट मैच? Yeah, biggest takeaway was that I think they know of their record, and how in Indian football and how in you know sort of a lesser level of football you don't really care about home and away, but the Premier League is the greatest example of home and away. And even though you have a fairly new look squad, आपको हमेशा लगता है कि यार Goodison Park में हम जीते नहीं है काफी टाइम से, and there are reasons for it. There are different reasons. Sometimes you don't get used to the atmosphere. Sometimes, I mean, the dressing room changes, the pitch is different, the surroundings are different. It can happen. Plus, like you said, they looked a bit rusty. They looked like they didn't know each other very well. वो तो होता ही है पहले मैच में. But I have a feeling that more than anything, they have not had the kind of preseason they would have loved to have. मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा पीआर वीआर के चक्कर में वो ज्यादा फंस गए, and getting the management settled, they were more busy in the American tour trying to make sure that relationships are maintained rather than focusing on the football and their best combination. But slowly वो चीजें जो है वो they'll start coming into order, I feel. So don't really go by too much by that scoreline at Goodison Park. The most important thing is the fact that we hadn't won there in some time, that is now over, and now they can get on with it and forget everything else. बिल्कुल, 3 पॉइंट्स इज ऑल दैट मैटर्स एंड चेल्सी वर एबल टू डू दैट। एक और टीम ने 3 पॉइंट पिकअप करे थे एंड दैट वाज स्पर्स, ऑल्दो उनका मैनर ऑफ विन जो था वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग था। 4-1 विन उन्होंने पिक करी अगेंस्ट साउथहैम्पटन। दे वर फैंटास्टिक। एंड अनंत त्यागी, द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा अबाउट दिस परफॉर्मेंस कि 4 गोल स्कोर करे टॉटनहम ने, हैरी केन एक में भी इन्वॉल्व नहीं थे और सॉन ने सिर्फ एक असिस्ट दिया, जो दिखाता है कि टॉटनहम एज अ स्क्वाड नाउ कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है। लॉट ऑफ न्यू साइनिंग्स एज वेल एंड दे लुक ऑमिनस दिस सीजन। सो मेरा सवाल एक्चुअली मेरे सवाल है आपसे। फर्स्टली, टॉटनहम इस सीजन क्या लगता है आपको कि टॉप 2 को चैलेंज कर पाएगी? एंड सेकेंडली, हमें पता है कि चेल्सी का रिकॉर्ड अगेंस्ट टॉटनहम हैज बीन वेरी वेरी गुड एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, बट एक मेंटल ब्लॉक है टॉटनहम का इस पर्टिकुलर ग्राउंड में। सो कैन दे ब्रेक दैट फॉर दिस मैच? And not just his ground play. The Blues have won all their 4 meetings with Tottenham from last season, और एक भी goal concede नहीं किया है since September 2020. So that is a record that Chelsea can be proud of. But talking about what you said, क्या वो top 2 को challenge कर पाएंगे? I think Tottenham are going to be the Chelsea of last season. I think अगर कोई सबसे ज्यादा challenge कर सकता है उन top 2 teams को, which is City and Liverpool, that's going to be Tottenham. I think Chelsea will have to challenge Tottenham this season, because मुझे जिस तरह का उन्होंने ट्रांसफर किया है, प्लस द एंटोनियो कॉन्टे फैक्टर कैन नॉट बी इग्नोर्ड. ही इज अ विनर, ही नोज हाउ टू विन, ही न्यू एग्जैक्टली उसको क्या बंदे चाहिए थे इन दिस सीजन, एंड ही इज मैनेज्ड टू गेट, आई थिंक, मोस्ट ऑफ देम. ही लुक प्रीटी हैप्पी इन हिज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो कि या आई थिंक वी प्लग्ड ऑल द गैप्स दैट वी वांटेड टू डू. तो मुझे उस लिहाज से लगता है कि टॉटनहम आर गोइंग टू बी अ फोर्स टू रेकन विद. व्हाट दे वुड लव टू डू इज बी अ फोर्स एट होम. अभी तो ये अवे मैच है, उनका अवे रिकॉर्ड जो है
they know how to come back from losing situations and play away from home. But I think it's their home record that they'll have to improve a lot more. And then Antonio Conte, वो manager है उनके पास जो उनके घर को fortress बना सकता है. Was Antonio Conte serial league winner, so Tottenham fans hope करेंगे कि maybe वो अपना पहला Premier League title जीते, but obviously it will be very very difficult considering कि Man City और Liverpool are irrepressible forces. So अनंत, अब काफी fascinating tactical battle होनी चाहिए in this match. शुरू करते हैं लेकिन अब हमारी best fantasy combination देखने के लिए. So let's start as always with the forwards. So कौन है आपकी पहली forward pick for this match? See, I was looking at some stats, and because history matters so much in Premier League, and Chelsea have scored at least 2 goals in 13 of their last 15 home matches against Tottenham in all competitions. तो मैंने कहा यार 2 goals तो पड़ेंगे, अब goal कौन मारेगा? I'm expecting Sterling to have a sterling, or should we say a stellar home debut in the Premier League for Chelsea. So I'm definitely picking Sterling in my side. वो होता है कि Man City देख रहा है. Man City देख रहा है what they have lost and have we really lost something. And Sterling is that kind of guy जो बहुत जल्दी trigger हो जाता है. And he always plays like a guy who has a point to prove, right from the tattoo on his leg to everything that he does on a football pitch and off it. Sterling उस तरह का बंदा है जो हमेशा ऐसा लगता है कि एक लड़ाई, एक अपने आप से एक जंग लड़ रहा है. और मेरे हिसाब से he'll be the player to watch out for from Chelsea's point of view. What will happen is कि वो Kai Havertz के साथ कैसे combine करता है, that could play a crucial role in how effective he is. Because क्या वो centrally खेलेगा, क्या वो left wide थोड़ा सा wide खेलेगा, that decides what Thomas Tuchel is thinking of him. But Thomas Tuchel, I think himself knows that he didn't want Sterling to waste his time at Man City, and that's why he's got him here. He will waste no time in getting off the blocks at Stamford Bridge. बिल्कुल सही कहा आपने. स्टर्लिंग इज ऑफ कोर्स समवन जिन्होंने रिसेंटली कमेंट भी किया था कि ही वाज सरप्राइज्ड कि व्हाई ही लॉस्ट हिज प्लेस इन द सिटी लाइनअप. एंड अनंत, वर्ल्ड कप इज आल्सो क्रूशियल फैक्टर व्हाई स्टर्लिंग मेड दिस मूव राइट नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली स्टर्लिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंग्लैंड के लिए, एंड ही विल probably want to be in top form and probably want to get a lot of minutes under his belt before the World Cup starts. So I think this is a major factor why he has joined Chelsea. Will be very very fascinating to see how he gets on as the season goes along. So आपकी पिक है स्टर्लिंग, सो आई विल गो फॉर 2 अगेन स्टेलर पिक्स जैसे आपने कहा, बट फ्रॉम द ऑपोजिट टीम टॉटनहम. एंड इन दोनों प्लेयर्स के बिना आई थिंक टीम बनाना बहुत मुश्किल है. वो है हैरी केन और सॉन ह्यूनमिन. आई थिंक कुछ बहुत ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. हैरी केन इज समवन ऑफ कोर्स जो ही लव्स प्लेइंग अगेंस्ट लंडन क्लब्स जनरली. चेल्सी के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं जितना लेट्स से आर्सेनल के अगेंस्ट है, बट मुझे याद है कि उन्होंने कुछ क्रूशियल मैचेस में ओवर द इयर्स गोल स्कोर करे हैं. ऑफ कोर्स ही इज आल्सो समवन जो मैंने देखा है कि बिग मैचेस में डज रियली रियली वेल, स्पेशली अगर आप क्रिएटिविटी की बात करें. और अगर एक प्लेयर है जो थोड़ा सा डिफेंसिव फ्रेलिटीज को एक्सपोज कर सकता है चेल्सी की, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर डिफेंस अभी जेल प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, इज सॉन ह्यूनमिन. नाउ हमने देखा है कि सॉन जनरली उनकी जो एवरेज पोजीशनिंग ऑन द फील्ड होती है इट्स अ बिट मोर हायर एज कम्पेयर टू हैरी केन. सो जो केन और सॉन का जो काफी ज्यादा अच्छा लिंकअप प्ले होता है दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स हम बात करेंगे आगे कि चेल्सी कैसे डिफेंसिवली सेटअप करेगी, बट अगर अनंत एस्पिलिक्वेटा राइट सेंटर बैक खेलते हैं तो सॉन आई थिंक कैन हैव अ फील्ड डे अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ द पेस advantage he has. So Son और Kane of course are 2 players जो हमेशा आपकी टीम में होने चाहिए whenever Spurs play because everything normally flows through them. अब बात करते हैं मिडफील्डर्स की. बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है अनंत, इसलिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम राइट मिडफील्डर्स पिक करें इन दिस मैच. सो कौन है आपके मिडफील्ड पिक्स? My midfield pick will be the man. जब भी पेनल्टी का इशारा करेगा रेफरी तो वो उठाएगा बॉल और वो मारेगा गोल. गुडिसन पार्क में ही इज द गाय हु ब्रोक दैट हुडू. सो मैं जॉर्जिनियो के साथ जाना चाहूंगा, नॉट जस्ट बिकॉज ही इज ऑन पेनल्टी ड्यूटीज. हमने जनरली देखा है रक्षित की ये दोनों टीम्स ऐसी हैं जो शायद सिमिलर फॉर्मेशन में खेलें. ये दोनों टीम्स ऐसी हैं जिनको टीम्स काफी अटैक करती हैं, एंड दोनों टीम्स ऐसी हैं हु लाइक टू कंट्रोल द गेम इन द ऑपोजिशंस हाफ. Especially since Conte has come, they would there's a slight change with their recruitment etc. But ये दोनों टीम ऐसी भी हैं जो attempt करती हैं through balls often. But because opponents play aggressively against them, मुझे ऐसा लगता है जॉर्जिनियो का रोल थोड़ा सा बड़ा होने वाला है. I feel Jorginho and Conte is not the best combination in midfield for Chelsea. I wish Kovacic could be brought into this, and I would have loved to pick him as well. But because Jorginho is effective in the midfield when opponents tend to play aggressively, तो मैं उनके साथ जाना चाहूंगा apart from the penalty duties that he will definitely be on if that were to be the case.
बिल्कुल अनंत, कोविचिच एक्चुअली एक स्मॉल इंजरी आउट है फॉर दिस मैच, सो दैट्स व्हाई आई थिंक कांटे जॉर्जिनियो शुड बी द मिडफील्ड जो इस मैच में खेलेगी। एक और चीज मुझे पसंद है जॉर्जिनियो के बारे में कि ही प्लेज अ लॉट ऑफ मिनट्स, और अगर आप ज्यादा मिनट्स खेलेंगे आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जनरली मैंने देखा है थॉमस टूगल काफी सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, चाहे वो कुछ विंग बैक्स हो चाहे वो फ्रंट थ्री के हो। जॉर्जिनियो इज समवन जनरली जो नॉर्मली 90 मिनट्स कंप्लीट करते हैं, दैट जनरली ट्रांसलेट्स इनटू मोर पॉइंट्स। एंड द सेम आई कैन से अबाउट मेसन माउंट एक्चुअली। नाउ ही इज समवन जो मेरे को बहुत पसंद है अनंत, आई एम प्रीटी श्योर एज अ चेल्सी फैन आपको भी मेसन माउंट बहुत पसंद है। ही इज समवन हु इज सो वर्सटाइल, ये लेफ्ट में खेल सकते हैं, राइट में खेल सकते हैं, नंबर 10 पोजीशन में खेल सकते हैं, कैन ड्रॉप एज पार्ट ऑफ अ 3 इन मिडफील्ड एज वेल, सो ही कैन डू ही कैन प्ले मल्टीपल रोल्स इन अ मैच। माउंट इज ऑल्सो समवन जो काफी सारे सेट पीसेस लेते हैं, रीस जेम्स के साथ काफी शेयर भी करते हैं। क्रिएटिविटी वाइज आई थिंक ही समवन जो काफी मुझे पसंद है इन द चेल्सी मिडफील्ड। सो इंटरेस्टिंग वंस अगेन अनंत यही होगा कि वो जेल कैसे करते हैं विद हावर्ड्स हो गए या फिर पुलिसिच हो गए, एंड ऑफ कोर्स विद रहीम स्टर्लिंग। फ्रंट थ्री कैसे ऑपरेट करते हैं, या फिर वो थोड़ा डीपर रोल खेलेंगे विद हावर्ड्स एंड स्टर्लिंग अप फ्रंट। सो वील हैव टू सी एग्जैक्टली कि हाउ मेसन माउंट शेप्स अप, बट व्हाटएवर टूकल डज विद दिस फॉर्मेशन, हमें पता है कि मेसन माउंट उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। सो प्योरली इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी आई थिंक मेसन माउंट इज समवन जो मैं रेकमेंड करूंगा फॉर दिस मैच। और अगर मैं अपनी नेक्स्ट मिडफील्ड पिक की बात करूं, इट्स अ गाय जिन्होंने मेरे हिसाब से ही वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन गेम वीक 1 ऑफ द प्रीमियर लीग, इज डेजान कुलुसेव्स्की। मेरे को बहुत पसंद है। लास्ट मैच में ही वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल अगेंस्ट साउथहैम्पटन। इन्होंने एक गोल स्कोर किया, एक असिस्ट प्रोवाइड किया, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रॉस दैट वाज, एंड आई थिंक ही वाज जस्ट ब्रिलियंट। ऑल्सो अगर अनंत आप देखें, चेल्सी ने अपने लास्ट मैच में मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस जो थी अपने लेफ्ट से कंसीड करी थी, तो प्रोबेबली एक वीक एरिया है। ऑफ कोर्स वी मॉनिटर एज द सीजन गोज अलोंग, एंड ऑफ कोर्स कुलुसेव्स्की खेलते हैं ऑन द राइट फॉर दिस टॉटनहम टीम, सो मे बी वो उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बट सर्टेनली अगर आप फ्रंट थ्री की बात करें करंट फॉर्म में, मुझे लग रहा है कि कुलुसेव्स्की माइट बी एक्चुअली अ बेटर पिक एज कंपेयर टू केन एंड सॉन। सर्टेनली समवन जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। So कुलुसेव्स्की समवन जो मैं रेकमेंड करूंगा इन चेल्सी वर्सेस टॉटनहम। सो तीन मिडफील्ड पिक्स हमारी हो चुकी है अनंत, लेट्स मूव ऑन टू द डिफेंस। यहाँ पे लॉट ऑफ सेंटर बैक्स, विंग बैक्स, किसे लें आप अनंत? आप बताइए, गाइड करें लोगों को कि किस डिफेंसिव पिक्स से आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं इन दिस मैच। यार रक्षित, तुमने पहले से ही डरा दिया है। तुमने कहा कि सॉन इज लाइकली टू बी अ हेडेक फॉर एस्पिलिक्वेटा, व्हिच इज व्हाई मुझे लग रहा था कि अगर चेल्सी एक बैक थ्री के साथ खेलती है तो क्या वो एक राइट साइडेड सेंटर बैक रीस जेम्स के रूप में देखते हैं। बिकॉज ऑल्सो टॉटनहम दे अटैक डाउन द राइट मोर। आई हैव अ फीलिंग एज वन ऑफ देयर स्टाइल्स ऑफ प्ले। तो मुझे ऐसा लगता था शायद रीस जेम्स जो है वुड बी स्लाइटली मोर सेफर इन दैट सेंस। बट द अदर प्रॉब्लम इज दैट Reece James, if he doesn't play as a right wing back, then Chelsea lose an entire dimension to their play. तो उसका right wing back खेलना जरूरी है। ये हो सकता है कि if Chelsea get a lead and in trying to protect the lead, and Chelsea are good at protecting the lead, then they might make a switch and they say, okay, now Reece James maybe can come back to right center back, and we don't have to go with an Aspilicueta type situation. पर रीस जेम्स को मैं अपनी टीम में आइदर वे रखना चाहूंगा, बिकॉज एज अ डिफेंडर ही कैन गेट यू पॉइंट्स, बट गोइंग फॉरवर्ड ही कैन बी एब्सोल्युटली लीथल। मतलब वो ऑलमोस्ट एक विंगर है जो जिसको आप राइट विंग बैक की तरह खिला रहे हो। सो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर रीस जेम्स इज वन ऑफ माय पिक्स। The other one was the man who had to go off the pitch last time because of a cramp, which was a new signing, Kalidou Koulibaly. Simply because I think one of the strengths for Chelsea last season, at least we saw, was the aerial duels. और ऑब्वियसली एंटोनियो रूडिगर और क्रिस्टेंसन को रिप्लेस करना आसान तो कभी नहीं होता, बट कूलीबाली में एक एबल रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश की है चेल्सी ने। Also because Tottenham tend to be very good in attacking their set pieces, I think Koulibaly could be key in making sure that Mendy has a much better day. तो कूलीबाली को मैं डेफिनेटली लेना चाहूंगा। ऑल्सो अगर चेल्सी थोड़ा सा हाई अप प्रेस करते हैं पिच पे, Silva and Aspilicueta might not have the pace to track back, but I'd expect Koulibaly to be able to do that clean up job. तो ये दो मैं डेफिनेटली पिक करना चाहूंगा। सॉरी सिल्वा, सॉरी Aspilicueta, and sorry Chilwell, I didn't see a place for you in my fantasy team. What about you? बिल्कुल अनंत, ब्रीफली अगर मैं बात करूं रीस जेम्स की, सो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है फुटबॉल में कॉल्ड अंडरलैपिंग रन्स। सो अगर वो ऑब्वियसली एक विंग बैक खेलते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ ओवरलैपिंग रन्स, बट इवन एज अ सेंटर बैक रीस जेम्स कहते हैं अंडरलैपिंग रन्स, बिकॉज नेचुरल टेंडेंसी हमें पता है उनकी अनंत इज टू अटैक।
सो उनको अगर सेंटर बैक पोजीशन भी होता है देन आई स्टिल एक्सपेक्ट कि वो काफी एडवांस एरियाज में होंगे. एंड ऑब्वियसली टूकल मिडवे थ्रू द मैच हमेशा अपनी फॉर्मेशन ट्वीक कर सकते हैं. तो रीस जेम्स कहीं भी खेले आई थिंक इज अ ग्रेट पिक फॉर दिस मैच डेफिनेटली. सो आपने दो चेल्सी डिफेंडर्स पिक करे. आई थिंक आई गो फॉर टू स्पर्स डिफेंडर्स. अगर अनंत पेरिसिच खेलते हैं तो ही बिकम्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पिक. बट आई डोंट थिंक पेरिसिच इस मैच में वंस अगेन गारंटी है कि स्टार्ट करेंगे. रायन सेसिन्योन ने लास्ट मैच में गोल स्कोर करा. ही लुक वेरी गुड एज वेल. एंड ऑब्वियसली कॉन्टे की जो टीम्स होती हैं उनमें विंग बैक्स हमेशा 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 सब्स्टिट्यूट होते हैं बिकॉज ये एक ऐसी पोजीशन है जहां से वो मैक्सिमम वर्क रेट एक्सपेक्ट करते हैं. एंड दैट्स व्हाई नॉर्मली आप देखेंगे कि जो भी विंग बैक खेलता है इस केस में शायद जैसे एमरसल रॉयल हो गए एंड रायन सेसिन्योन हो गए डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो पूरे 90 मिनट्स खेलेंगे. इनफैक्ट डू नॉट इवन एक्सपेक्ट कि वो 65-70 मिनट्स खेलेंगे. आई फील कि यहाँ पे डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है. इसीलिए आई एम गोइंग फॉर सेफर पिक्स. आई विल गो फॉर द टू सेंटर बैक्स जो मुझे मैक्सिमम पसंद है फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू. एज एन अर्जेंटीना फैन ऑब्वियसली आई विल गो फॉर क्रिस्टियन रोमेरो. मेरे को वो बहुत ज्यादा पसंद है. ही लव्स अ टैकल एज वी हैव सीन इन द पास्ट. एंड एज अ रिजल्ट ये आपको बहुत ज्यादा डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं स्पेशली अगेंस्ट बिगर टीम्स. आई थिंक क्रिस्टियन रोमेरो इज अ ग्रेट डिफेंसिव एसेट क्योंकि ये एक प्लेयर है जो बहुत रिलायबल है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग ओवर 90 मिनट्स. एंड आपको ऑब्वियसली आपको स्पेशली टैकलिंग पॉइंट्स भी दे सकते हैं एज द राइट सेंटर बैक. अगर मेरी दूसरी पिक की बात करें आई विल गो फॉर एरिक डायर. नाउ आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डायर बट लास्ट मैच में गोल स्कोर किया था. आई एम नॉट सेइंग इस मैच में स्कोर करेंगे बट वंस अगेन ही समवन इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी कॉन्टे बहुत ट्रस्ट करते हैं एंड ही विल गेट अ लॉट ऑफ मिनट्स. एंड मिनट्स under Conte is very very important especially because of 5 substitutions आ गई हैं in the Premier League simply because of these two things and also because wing backs का में अभी तक पता नहीं चला है who's good who's not. I'll go for the two safe center backs. So Dyer and Christian Romero are my two defensive picks for this match. एक position बची है अनंत goalkeeper. Will you go for Lloris or will you go for Mendy? How can I not pick Mendy? Tell me. I mean, he's one of the best goalkeepers in the world. Obviously, Hugo Lloris, captain's trance. लेकिन मैं हमेशा से Mendy और Lloris में पहले भी जब 4 बार Chelsea और Tottenham मिले थे last season, तो Mendy was always going to be one of the first names on the team sheet for me. उसके अगर technical reasons देखे जाए तो again, like I said, Tottenham have a tendency to attack their set pieces. Tottenham की एक style of play, they tend to take a lot of shots. They're very aggressive. They attack through the middle, so you'll expect that if one of the centre backs get beaten, shots on target could come for Mendy. I'm not expecting a clean sheet, let's be honest. ना Lloris के लिए ना Mendy के लिए, but क्योंकि Chelsea घर पे खेल रही है, and I have a feeling that Mendy will feel more comfortable. And even though Koulibaly और Silva के रूप में एक नया combination सामने है, still Mendy's experience will come in very handy. I trust him to have a good game overall. He might be busy, but that's what we need, right? Harry Kane and Son to take lots of shots and Mendy to save them if you're a Chelsea fan. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक मेंडी इज अ ग्रेट पिक. ग्रेट शॉट स्टॉपर. वेरी क्लोज वंस अगेन जब गोलकीपर स्पेशली अगर दोनों टीम्स कंसीड करती हैं थोड़ा डिफिकल्ट होता है पिक करना. बट आई थिंक मेंडी इज इक्वली एज गुड एज लोरिस इन दिस मैच. वेरी वेरी क्लोज कॉल ओवरऑल आई फील. अनंत आई थिंक हमने इस पर चर्चा नहीं करी है. सो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की बात करते हैं. वेरी वेरी ट्रिकी स्पेशली बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि हम बैक कर रहे हैं दोनों टीम्स को इस मैच में गोल स्कोर करने के लिए. सो हमने कैप्टन किया है सॉन को एंड वाइस कैप्टन किया है स्टर्लिंग को. तो आप बताएंगे कि व्हाई वी हैव चोजन दिस कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव जो हम यूजर पिक कर सकते हैं फॉर दिस मैच. Son goal marega. It's as simple as that. That's why we pick him as a captain. But at the same time, I think he's somebody who can always create chances for you. So even if he doesn't have a great day, he'll still give you a 7 on 10 performance. That's the kind of player Son is. He's an engine. So वो दौड़ता रहेगा. प्लस अगर काउंटर अटैक की if Chelsea were to keep the ball more, which I'm expecting them to because they're playing at home and that's the style of play they like, तो काउंटर पे हमेशा opportunities आएंगी. And you know what Son can do. Google some of his best goals, you know exactly how he scored them. Plus what he's very good at is hitting shots on target. तो मुझे ऐसा लगता है कि somebody who can create chances, somebody who can constantly trouble the goalkeeper, and somebody who can be very effective on a counter attacking opportunity, उसको आप कैप्टनसी दे दो तो अगर आपकी टीम अच्छा करती है तो कैप्टन को पॉइंट्स भी ज्यादा मिलेंगे. वाइस कैप्टन स्टर्लिंग मैं इसलिए भी सोच रहा था रक्षित बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू लाइक आई सेड हैव अ वेरी गुड डेब्यू. चांसेस क्रिएट कर सकते हैं वो खूब सारी. स्कोर ऑब्वियसली कर सकते हैं. उसके अलावा बिकॉज चेल्सी टेंड टू प्ले अ लॉट ऑफ थ्रू बॉल्स, I think Sterling with his sudden burst of pace can trouble and run into those spaces, which I'm expecting him to do. So
स्टर्लिंग को एक वाइस कैप्टनसी पिक आप इसलिए भी ले सकते हो बिकॉज अगर एक टीम अगर टॉटनम अच्छा नहीं करती तो आपको चेल्सी के जरिए स्टर्लिंग पॉइंट्स दिला सकते हैं, और अगर चेल्सी अच्छा नहीं करती तो सॉन के जरिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं. तो ऑलवेज अ गुड बैलेंस दैट वी ट्राई एंड फाइंड. Couldn't find a better midfielder to pick otherwise. बिल्कुल. और अगर मैं 3 नाम और फेंकू इन द हैट फॉर कैप्टेंसी, आई विल प्रोबब्ली गो फॉर हैरी केन. ऑफ कोर्स Harry Kane, एवर yeah. रिलायबल, पेनल्टीज पे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि लंदन डार्बीज में ही डज वेल. इट्स वेरी क्लोज कॉल. अगर आप केन और सॉन की हमेशा बात करेंगे, इट्स ऑलवेज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट. उसके अलावा आई थिंक 2 अदर नेम्स जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हैं, आई वुड से रीस जेम्स, Reece क्योंकि James, yes. समवन जो बहुत ही रिलायबल है मेरे ओपिनियन में. क्लीन शीट ऑब्वियसली दे सकते हैं चाहे कितनी भी अनलाइकली हो, बट ही गेट्स अ लॉट ऑफ चांस क्रिएशन पॉइंट्स, काफी पासेस कंप्लीट करते हैं. असिस्ट पोटेंशियल वाइज तो मे बी ही इज नंबर 1 इन द एंटायर चेल्सी टीम. तो ही Yeah. समवन जो मैं रिकमेंड करूंगा. एंड ऑफ कोर्स कुलुसेव्स्की, आई वुड से, बिकॉज ऑफ हिज करंट फॉर्म, बिकॉज करंटली चेल्सी थोड़ा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे शायद डिफेंसिवली वीक हो सकती है, एंड बिकॉज लास्ट मैच में उन्होंने 1 गोल 1 असिस्ट कंट्रीब्यूट किया था. सो ये आई थिंक ग्रुप ऑफ 4-5 कैप्टेंसी पिक्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं फॉर दिस मैच. सो अनंत, टाइम आ गया है प्रिडिक्शन का. स्कोर लाइन प्रिडिक्शन. ट्राई टू बी एज अनबायस्ड एज पॉसिबल. क्या है आपका प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच? No, my prediction is absolutely unbiased, and I'm going with a few numbers here because I think Chelsea have seen less than 2.5 goals in their last 3 matches against Tottenham in all competitions. If my memory serves me right, they're also undefeated in the last 13 matches against Tottenham in all competitions. I think they'll maintain that record of being unbeaten. I don't think they'll win, but I'm expecting a very open game this time. And I think it could be a 2-2 because Antonio Conte Stamford Bridge वापस आ रहा है. वो हार के तो नहीं जाना चाहेगा after what happened last season, where Tottenham had to face defeat so many times across cups and the league. तो clean sheet इस मैच में मुझे नहीं लगती आएगी. तो दोनों goalkeepers concede तो करेंगे, but Tottenham will be dominant. Chelsea might find a way back into the game and they will be able to hold on to a draw. I am thinking of maybe 1-1 या 2-2 भी हो सकता है. But I think you're going for a winner. आई एम गोइंग फॉर अ विनर. एंड अनंत, इसका रीजन ये है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मैच होता है यूजुअली डिटरमिन्स की कौन सी टीम जीतती है. आई थिंक टॉटनहम आर इन अ ग्रेट मोमेंट राइट नाउ. आई थिंक दे आर अ मोर सेटल्ड टीम. कॉन्टे के अंडर ऑब्वियसली एक मोर देन सीजन उनका आ चुका है अंडर द बेल्ट, एंड उन्होंने जो रिक्रूटमेंट अपना इतना अर्ली करा है, उससे उनका जो प्री सीजन है दैट हैज बीन फिनोमिनल. आई थिंक आप अग्री करेंगे कि चेल्सी का प्री सीजन प्रिपरेशंस हैव नॉट Not बीन good. एज good as Tottenham, and I think they look really really good. I know वो mental hoodoo है. I know Chelsea का recent record against Tottenham is phenomenal, but I have a feeling कि under Conte जो obviously revenge चाहेंगे for what happened last season. I just have a sneaky feeling कि Tottenham are playing Chelsea at the right time, and this is the reason I'll back a 2-1 Tottenham win. Sorry Anand, in this particular match. कोई बात नहीं. So let's see what happens. Once again, thank you Anant Tyagi for joining us Thank on you. VUSport Scouts, and we'll hope to see you again for another big match in the Premier League, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, and the entire season which is coming up. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe, and I will see you soon. Cheers, guys.